और मैं स्कॉटलैंड की सिटी ग्लासगो से बिलोंग करती हूँ। I'm currently a mind sciences student of Dr. Saef Qureshi. और मैं इनके साथ एक साल तकरीबन 1 साल से I've been his student. और मैं चाह रही थी कि इनका मैं इंटरव्यू लूँ और just to talk about his expertise, how he entered this field, and I was just interested to know more about the things that he does. So, Assalamu alaikum, Dr. Syed Saif Qureshi Saab, and thank you so much for accepting my request कि आप आए शो पर और थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू हम करें. Thank you so much for squeezing in that time. I know you have a really busy schedule. So I would like to start with आप बताएं, how did you come into this field, and how did you start this journey? Everything is so interesting. Just tell us everything about yourself. I'll hand it over to you. Walaikum assalam, Samara Sahib. First of all, I'm really thankful to you that you invited me and you took me as a guest. Uh, my journey in spirituality and in all these sciences, what I see is a parapsychological domain mostly. And when I like traveled in West, uh, when I went through many places, schools, universities, trainings, workshops, listened to the various orators, lectures, people, scholars all over the world, all around the globe. I found one thing: they have everything in their own particular field of expertise except Allah. Now, when I fell back to my own country and to our own religion, I found that their knowledge is nothing, absolutely nothing, in front of whatever has been presented to us in Holy Quran and the book. Mm-hmm. And from there, my interest developed actually. Then I started researching and I started learning about lights, colors, phenomena, therapies, Mm-hmm. stones, gemstones. We talk about like mind-to-mind communication. We talk about Mm-hmm. like extraterrestrial uh, territories where we travel. We talk about like out of body experiences. We talk about many other things. And interestingly, all these things are found in Holy Book of Quran. The last Mm-hmm. messenger, Hazrat Muhammad Mustafa Ahmad Mustafa sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi wasallam. was given the book, and right from there the journey started. And then I came in the public domain back in 2018. Mm-hmm. Before that, my family already knew that what Mm-hmm. path I'm working on. I had a very good settled job. I had got a very good settled life. I threw Mm-hmm. everything back and I like started over on the spirituality and coming in the public domain and started serving people, Mm-hmm. answering the questions, knowing about the stars. Like all these things had to they were Yeah. like of very phenomenal and basic interest for me. All these things. So, So so how many years, how many years have you been in this field? Has it been like, countless, for you? Has your journey been pretty long? How many years has it been? uh, well, as I told you, in public domain, I came in 2018. Right after that, in 2020, the corona came in, and Mm-hmm. then before that, like you can say, I started my journey when I was in ninth grade student. I was a student of Mm-hmm. a ninth grade at that time, when first I got a book of palmistry from the library of my school. Like the Right. librarian was not allowing me to read that book due to some reason that we were not allowed to go in that Uh-huh. section of the library. But somehow I managed to barge into that and I started reading that book. And from there, my interests start developing. So that's like a Right. brief about my journey. That's amazing. Okay, so I'll fire away with you. I have some questions that are of interest to me, especially. I always find these topics quite interesting. So you always talk about numbers. Numbers, you link them to the name, date of birth. You always refer back to numbers. So can you tell us what's the importance of these numbers? How do you calculate it? How do you link it to our date of birth? You always tend to link up the name to the date of birth, or what number is compatible, and then also you're able to just take the name and
tell everything? Like, what's the science behind that? What is the logic behind that? Can you explain that? Yeah, it's a pretty interesting question, actually. To make my audience understand it more, if you allow me to switch over and talk in Urdu a little bit. देखिए, numbers का, I hope that you pretty well understand Urdu, and I if do. Yeah. Sorry, I speak Urdu too, so we can तो switch over to Urdu. इंसानी जिंदगी का बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है या सवाल है, ये इल्मुल अदात से मुताल्लिक है, न्यूमरोलॉजी, जिसको इल्मुल अदात कहा जाता है। जी। तो कुछ लोगों के लिए कुछ नंबर्स बड़े मुबारक साबित होते हैं जिंदगी में, कुछ लोगों के लिए वही नंबर्स नेगेटिव साबित होते हैं। लेकिन 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं, ये कलाम पाक में भी मौजूद हैं, और 7 आसमानों का जिक्र, फिर 6 दिन में तख्लीक कायनात का जिक्र, फिर अल्लाह पाक के 99 नाम। अल्लाह पाक तो एक हैं, वाहिद हैं, अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह पाक का तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि देखें कि उस एक ज़ात के जो है वो 99 नाम है, जी 99 बिल्कुल। अल्लाह पाक की ज़ात के। तो उसको 99 को अगर आप मिलाते हो, तो फिर ये 9 + 9 बनकर 9 बन जाता है, 18 बन जाता है, 18 से फिर वो। तो इस तरीके से हर नंबर की अपनी फितरत है, अपनी माहियत है, और अपनी जो है वो उसकी एक क्या कहते हैं कि नेचर है उस नंबर की। तो उस लाइक नंबर हर को जो नंबर की वाइब्रेशन है अपनी। वाइब्रेशन यू कैन से, या या जस्ट आप एक्सप्लेन करें कि ये लाइक नाम का लाइक कितना हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे नाम का और हमारी डेट ऑफ बर्थ का, एंड देन से कि वो दोनों, एक आपका नाम का नंबर और है और डेट ऑफ बर्थ का और है, एंड दे आर नॉट कंपैटिबल, तो उसका फिर आप क्या करते हैं? इसकी कोई रेमेडीज होती हैं? ये कैसे हैंडल होता है फिर? बड़ी बहुत ही ज्यादा वास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ नाम देखा गया है, यूं समझ लीजिए कि वैसे मैंने और किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज शायद हासिल की हो या नहीं की हो, लेकिन नामों में समझ लें कि मैंने पीएचडी किया हुआ है। ये मेरा क्लेम नहीं है, ये मेरी रिसर्च है जो मैंने इतने सालों से नामों में की है। कुछ नाम शादी के लिए इंतहाई गैर मौजू होते हैं, जिंक्स्ड होते हैं। देयर आर सर्टेन नेम्स, ये जिंदगी के आपको हालात यकसा मिलेंगे। मसलन मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा, जैसे राबिया नाम है, इस जी। नाम की जो लड़की होगी, आपकी भी यकीनन बहुत सारी जानने वाली होंगी, देयर आर मेनी माय क्लाइंट्स ऑफ दिस नेम राबिया। इनकी मैरिटल लाइफ में कभी मैंने सुख नहीं देखा, लाइक दे आर ऑलवेज इन अ प्रॉब्लम, दे आर ऑलवेज इन सम सॉर्ट और द अदर कॉन्फ्रंटेशन। क्योंकि अगर हम इस नेम की ओरिजिन पे जाते हैं, तो बीबी राबिया बसरी से नाम मंसूब है, जिन्होंने अल्लाह पाक की इतनी ज्यादा इबादत की थी दुनिया को छोड़कर, या दुनियादारी की भी थी। और राबिया बसरी साहिबा ने शादी की भी थी, लेकिन हस्बैंड से वो परमिशन लेती थी कि अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आ जाती हूँ, नहीं तो मैं अपने मुसल्ले पे चली जाती हूँ। तो अगर जो हमारे पास सोसाइटी में राबियाएं हैं, अगर वो इबादत की उस नहज को पहुंचती हैं, तब तो उस नाम के फयूज और बरकत हासिल करेंगी। लेकिन अगर उनके पास नमाज और मुसल्ला नहीं है, तो उनकी जो दुनियावी जिंदगी है, ये बड़ी कठिन गुजरती है। इसके साथ एक और मिसाल मैं आपको दूं कि कुछ मुकामात हैं जो अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस हैं। उनमें से एक मुकाम है सिदरतुल मुंतहा, जहां जिब्रील अमीन जो है वो, उन्होंने मना कर दिया था। जिब्रील, द गैब्रियल, what you call it in English, he refused that, I sorry sir, I cannot accompany you on this certain platform because I'm not permitted to enter into that domain or in that galaxy, Sidratul Muntaha. Because ये वाक़या है सफर इसरा का, सुबहान अल्लज़ी इसरा बिअब्दिही, सूरह बनी इसराइल। तो यहाँ पे जो मेराज का वाक़या है, जब आपको ले जाया गया 7वें आसमान से ऊपर, बेरी का दरख्त सिदरतुल मुंतहा, जिसके बारे में कहा गया कि छा रहा था सो छा रहा था, सूरह नजम अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं उसका रेफर, तो सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है जो अल्लाह और उसके हबीब के लिए है। ठीक है। अब यहाँ आप क्या करते हो? मैंने इतनी बच्चियां देखी हैं जिनका नाम सिदरा है या सिदरतुल मुंतहा, बच्ची का नाम रख दिया दुनिया में उन्होंने। अब क्या आप बताओ, वो वाइब्रेशन बर्दाश्त कर सकेगी जो उस नाम से एसोसिएटेड है? जी बिल्कुल। And especially if she is a female, certain days of a month she doesn't pray, she gets napak. तो क्या सिदरतुल मुंतहा नापाक हो सकती है?
सिदरा नापाक हो सकती है, सिदरा हम्म नापाक नहीं हो सकती। तो इसलिए वो जो वाइब्रेशन उस नाम की उसको पड़ेगी, उलट पड़ जाएगी, और उसकी मैरिटल लाइफ मैंने सिदरा की हमेशा प्रॉब्लम में देखी। सादिया हम्म नाम है, बड़ी हम्म प्रॉब्लम देखा मैंने, मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम है। सना स्पेशली, हम्म सना नाम की खातून आपको कभी, मतलब आपको सुख में नहीं मिलेगी। एक आध मैरिज उसकी हम्म ब्रोकन मिलेगी, मिलेगी आपको, रिलेशनशिप मिलेगी आपको उसकी ब्रोकन। तो ये हम्म कुछ नामों के इसरार होते हैं। जैसे अब दुआ नाम है, जी हिरा नाम है, दुआ बड़ा कॉमन नाम जी है। दुआ के साथ तो कोई ऐसी वाबस्ता नहीं है कि जी ठीक है, सिदरा में तो ये है कि सिदरतुल मुंतहा है, उस वजह से जिंक्स हम्म अगर हो जाता है। सना अल्लाह की है, या अल्लाह के हबीब की है, या आले रसूल की, और किसी की सना नहीं है कायनात में। हम सना रख लेते हैं अपनी बच्चियों का नाम। हम्म अच्छा, सना नापाक तो नहीं हो सकती ना, फिर सना तो पाक होनी चाहिए। हाँ, हम्म ये महीने के कुछ दिन है जो सना नापाक हो रही है, तो वो वाली जो नहुसत पड़ती है आकर उस नाम की, वो बेचारी हम्म बैठ जाती है, उसका कभी घर आबाद नहीं होता सना का। मोस्टली से वाले नाम जो है, जी इनका घर आबाद नहीं होता। ये बड़ा वो जैसे दुआ है, दुआ का मैं हम्म आपको समझा रहा था। सो ये एस एस होता है इंग्लिश में, ये एस होता है से Says as in English, but we are, if हम्म the name's origin is of Arabic, so we'll हम्म go for that always. राइट 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 तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो फिर लाइक कंसल्टेशन करनी चाहिए बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, फिर आप नाम प्रिस्क्राइब कोई सूटेबल करते हैं कि लाइक हाउ आर यू सपोज्ड टू कीप हर नेम देन, यू नो, लाइक The लोगों को तो Yeah, नाम that's a very interesting question for the name. Actually, we go to the origins of the name. ठीक है, इसी तरह हम्म मर्दों में बहुत सारे नाम हैं जहां पर जिन नामों का मजमुआ 9 पर आएगा, 9 बनेगा हम्म न्यूमरोलॉजी में, तो 9 वालों की एक शादी नॉर्मली टूटती है, रिलेशनशिप टूटता है। दूसरा हम्म 9 वालों का मैं आपको बताऊं, मैं वन बाय वन सारे नंबर्स कवर करूंगा। अगर आपके हम्म पास 2 मिनट हो मुख्तसर, तो मैं आपको बता। ठीक है 9 वालों की जिंदगी में क्या होता है कि स्ट्रगल बहुत आती है, बहुत शदीद हम्म स्ट्रगल आती है 9 वालों की। बॉसेस के साथ नहीं बनती, ऑफिसेज में इनकी नहीं बनती। 9 वाला अपना कारोबार करेगा तो कामयाब होगा, अगर 9 वाला जॉब में आ हम्म जाएगा बेचारा फटे में पड़ जाएगा। उसके बदख्वाह हम्म बहुत होंगे। What you call badkhwa in English is like people who are jealous or the backbiting. या That या kind of people, like he'll be facing antagonism in the offices, politics, and all this and that. ये 9 वालों राइट का। सो वो बेटर है कि वो अपनी बिजनेस कोई करे, नंबर नाइन्स। If number 9 will do their own business, they'll हम्म be facing a huge struggle. Normally number 9 में क्या होता है, जिंदगी के शुरू के हिस्से में इनकी लाइफ में बड़े रेवोल्यूशंस आते हैं, इनकलाबात आते हैं, और कोई ना हम्म कोई एक वाकया जिंदगी में इनका शुरू में बचपन के वो ऐसा होता है कि ये बड़ा बुरा वाकया होता है, यानी कि they get like get they scarred get for a life। tragic, हाँ, they get a tragedy in initial period of their life or something like Mhm. that, but then once they start picking up, Mhm. then there is, the sky is the limit for them. But Mm. one relationship of number 9, remember, is Mhm. tend or set to be broken always. Yeah. So ये आपकी लाइक आपके क्लाइंट्स की हिस्ट्री में ये आपने ये देखा है पैटर्न? ये पहले मुझे नहीं मालूम था इन सब चीजों का, बट मैंने स्टार्टिंग पीपल एंड एनालाइजिंग द पैटर्न Mhm. सिमिलैरिटीज कि भाई सादिया नाम के साथ क्या नहुसत है, या क्या Mm. मसला है। या जैसे मैंने सना बताया, दुआ बताया, हेरा बताया, जी। कोमल बताया, ये सारे जिंक्स्ड नेम्स हैं। Mm. बहुत सारे हैं, महक हो गया, ये इन इन Mhm. बेचारियों की, इकरा हो गया, इकरा, हिरा हो गया। Mhm. हिरा Mhm. वो चीज है जहां पर गारे हिरा, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वसल्लम। पहली वही नाजिल हुई थी। जी। तो तो क्या नबी अलैहिस्सलाम जो है वो किसी नापाक जगह पर तो इबादत नहीं कर सकते थे ना? जी, तो जी, आप बिल्कुल। बच्ची का नाम हिरा रख लेते हो, तो वो Mhm. तो बेचारी नापाक भी हो रही है, उसके साथ और भी मसा। तो हिरा वालों की लाइफ भी मैंने तबाह देखी है, प्रॉब्लम में देखी है। इकरा देखें, Mhm. Mhm. पहला जो वर्ड आया है कलाम पर, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। अच्छा, वी कीप दीज़ नेम्स क्यों? हमें प्यार है इन नामों जी, से, मुकाम जी। से प्यार है।
हम अकीदत है। रिस्पेक्टफुली लोग रखते हैं ना ये नाम, जी, तो रिस्पेक्टफुली वो रखते हैं। पीछे लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड दे डोंट द अंडरस्टैंड कि टेक्निकलिटीज आफ्टर लाइफ क्या बिहाइंड। होता है इसका। जी जी हाँ, बिल्कुल। सो दे शुड टेक पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स शुड टेक रहनुमाई, लाइक वो ले लें किसी से कि आप गाइड कर दें नाम कैसे रखा जाए, यू नो। सो आई उमूमन तीन नंबर्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 7, खवातीन अगर नंबर 7 पर हैं तो नॉर्मली इनकी 2 शादियां होती हैं। अब 2 शादियां कितनी तकलीफ दे बात है, कोई खुशी की बात तो नहीं है। एक शादी टूटेगी तो दूसरी होगी ना भाई। बिल्कुल जी। वो पहली शादी के कर्ब से गुजरेगी गरीब, फिर वो दूसरी पे जाएगी। 7, 8 और 9 ये 3 वो नंबर्स हैं जिन पर पैदा होना और जिन पर शादी करना, ये बड़े दुनिया में वो इम्तहानात का काम होता है। चलें, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करे जिनके ये हम्म, नंबर्स है। शैल वी मूव ऑन टू द या, नेक्स्ट? या सो आप बताते हैं लाइक अबाउट gemstones, you like you usually talk about prescribing gemstones कि आप ये पहनो, और how do you like आप कैसे वर्कआउट करते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वर्कआउट करते हैं या नाम के हिसाब से? और ऑल्सो ये हेल्प कैसे करते हैं, लाइक इनकी कोई फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, या व्हाट इज लाइक, इसका आप एक्सप्लेन करें कि सम पीपल जस्ट थिंक कि स्टोन पहन लिया तो नहीं कुछ भी नहीं होता, लाइक दे आर वेरी skeptical. Or हम्म, you know, even myself, I was like that too. I always thought ये कैसे हो सकता है, from one stone you're receiving, like how can one stone change your life? So इसका आप explain करें, like what is the kind of logic behind that, कि हम्म, हम्म। stones का कैसे आप workout कैसे करते हैं, and what are the things that they can be used for, like what do they help? Very interesting question this is. Normally, how we find out about the stone is to determine the ascendant of a person when the time when he is born is like a rising star at the time of his birth is his Mm-hmm. ascendant. Okay? Mm-hmm. Apparently, if you're born on 25th of May, you're a Gemini, but you don't Mm-hmm. know what ascendant at it was rising at that time of your birth. Then we Mm-hmm. need to calculate some astrological hisabat or mathematics of the astrology. Then we Mm-hmm. come to know, okay, yes, now this is the vibration that would gonna favor him according to his chart. We work out that Right. कि देखिए चार्ट क्या होता है। मेरे पास बड़े सारे सवाल आते हैं एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक। आज मैं ये कंफ्यूजन भी दूर कर ही दूं आपके तवज्जुह से। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट इल्म गैब, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट अ Mm-hmm. गूगल मैप ऑफ योर डेस्टिनी कि आप एक इंसान पैदा हुआ है, अब Mm-hmm. उसने कहीं तो जाना है ना भाई। जी। एक फिशरमैन बनेगा या ये माउंटेनियर बनेगा, ये हिमालय चढ़ेगा या ये पानी में शिप चलाएगा या ये क्या करेगा, इसकी डेस्टिनी क्या है। दैट्स अ Mm-hmm. गूगल मैप। कि आप मुझे बताएं कि आजकल क्या आप गूगल मैप्स के बगैर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो उधर यूके में? कैन यू ड्राइव अ व्हीकल? I know it's difficult, like to get from A to Z. You do sometimes, you do most times, you do need the sat nav to Unless you help you. know the route, Yeah, unless you unless know you the know where route you're going. we're Yeah. going, we're going in an unknown destination as a destination unknown. Mm-hmm. हमारी जिंदगी में हर आने वाला दिन अननोन एक पैरामीटर लेकर आता है, जी सेट ऑफ जी। एक्सपीरियंसेस लेकर आता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन Mm-hmm. गिवन लक एंड बैड लक। तो हम क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वी जस्ट स्टडी द पैटर्न ऑफ द प्लैनेट्स। पहली Mm-hmm. बात तो यह है कि प्लैनेट्स को हमारे लिए बनाया गया है, हमें प्लैनेट्स के लिए नहीं बनाया गया हुआ Mm-hmm. है। हमें प्लैनेट्स के लिए नहीं बनाया गया, प्लैनेट्स को हमारे लिए बनाया है। तो हमें देखना होता है कि ये जब बंदा पैदा हुआ था तो फलां प्लैनेट इसका किस पोजीशन पे था, ये दुनिया में क्या करेगा, ये किस तरीके से इसको लेफ्ट मुड़ना चाहिए या राइट मुड़ना चाहिए, डिसीजन क्या लेना Mm-hmm. चाहिए। जी। इसलिए जो लाइफ में मेरे पास जो मेजर प्रॉब्लम आती है, रिजक नहीं है जी, शादी नहीं हो रही या शादी चल नहीं रही या एजुकेशन या Mm-hmm. इमिग्रेशन, इन सब चीजों के लिए पत्थर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम वो डिटरमिन या जज कर लेते हैं कि हम इसको मेडिसिन कौन सी दें। इनके देखिए ये Mm-hmm. मैंने पहने हुए, दीज आर जस्ट जी मेडिसिनल जी। यूज। हमारा आंसर एतकाद नहीं है खुदारा, कोई Mm-hmm. एतकाद नहीं है। जब कोई पत्थर आपको मिले आप उस पे दम नहीं करोगे। आपको एक Mm-hmm. इसमें आजम मिलता है इसको पढ़ने का, पत्थर पे पढ़ने का एक अल्लाह पाक का अच्छा। नाम दिया जाता है। हाँ। आप मुझे बताओ, आप फोन चार्ज नहीं करोगे तो हाउ फार कैन यू रन योर मोबाइल फोन फॉर 2 days और मैक्सिमम 3 days यू कैन रन। उसके बाद तो फोन डेड हो जाएगा ना। डेड हो जाएगा जी।
इसी तरीके से हम ये नहीं करेंगे, पत्थरों पे दम या जिक्र नहीं पढ़ेंगे तो ये डेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जिक्र कर रहे हैं, हम भी इनको जिक्र दे रहे हैं, हम इनको खुराक दे रहे हैं, हम इनको खिला रहे हैं, हम इनको पानी पिला रहे हैं। अल्लाह Mhm. पाक का जो जिक्र है ये इसकी खुराक होती है। तो ये स्टार्ट Mhm. वर्किंग, इट स्टार्ट ब्रिंगिंग चेंजेस इन लाइफ। आप Mhm. मुझे बताओ, आप चल रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभ रहा है, there's a thorn in your feet, if won't you take it out, can you walk properly? No, You won't definitely be. not. Yeah. एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या इल्मुल अदाद या इल्मुल जफर, ये सारे उलूम पैर से कांटा निकालने के लिए होते हैं। इसमें Mhm. ये नहीं होता कि हम तकदीर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से अगर होता तो अल्लाह पाक ने कलाम पाक में फरमाया है कि लोग सितारों से भी तो रास्ता दरियाफ्त करते हैं, जी। लेकिन ये नहीं पता है कौन सा रास्ता दरियाफ्त करते हैं। तो Mhm. जिंदगी से बड़ा रास्ता कौन सा होगा? ये है आपके सवाल का जवाब। थैंक यू। जी, नहीं, नहीं, thank you so much for that because it was always like एक curiosity होती है और बाज़ लोग नहीं मानते और they just they think that आप शिर्क और वहम कर रहे हैं कि you shouldn't be wearing this, and so it was something that was always at the back of my mind. तो और फिर also I'll go on to the next thing जो है इसमें आज़म। तो आप फिर like इसमें आज़म भी बताते हैं, you prescribe according, तो फिर आप charts देखते हैं, उनकी problem को analyze करते हैं, then you prescribe इसमें आज़म। So मैंने तो सुना था कि like एक आपका नाम के हिसाब से निकलता है इसमें आज़म, जो वो calculations जैसे आप करते हैं, like you calculate it, तो वो is certain times अल्लाह का नाम आपने फिर पढ़ना होता है for, and do you just calculate that from the name, again going back to the name, or date of birth, तो फिर आप each individual को उनका अपना देते हैं इसमें आज़म, and what are the effects, like is that your like ism for the rest of your life, can you shed light on that? या इसमें आज़म का जो कॉन्सेप्ट है, देयर सम सर्टेन मास्टर कीज इन दिस यूनिवर्स बाय अल्लाह पाक, as I Mm-hmm. told in the beginning of the show, there are 99 names of Allah Pak, Mm-hmm. besides like over 6,600 ayats in Holy Quran. There are 99 names of Allah. So इसमें आज़म का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम इंसानों के, लाइक हर इंसान का कोई ना कोई तो नाम है ना, किसी न किसी जी। नाम से पुकारा जाता है, आइडेंटिफिकेशन है उसकी। तो Mm-hmm. उसके नाम के अदद को लिया जाता है, उसके नाम की खासियत और माहियत और हैयत को देखा जाता है। अब आप तो Mm-hmm. खैर ये यूके में रहती हैं, ये अल्फाज नहीं समझे खासियत, माहियत और हैयत क्या होती है। I tell you, we check the qualities of that particular vibration or pronunciation. If this, there are four elements in this world. चार Mm-hmm. अनासिर हैं दुनिया में, हवा है, जी। आग है, मट्टी है और पानी है। सारे नाम Mm-hmm. इन्हीं किसी न किसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। तो हम अल्लाह पाक के ऐसे नाम मुंतखब करके उसको देते हैं जो Mm-hmm. कि उसकी वाइब्रेशन के साथ मैच करते हैं, और उसको सर्टेन नंबर में वो पढ़ता है तो जिंदगी में इनकलाबात आना शुरू हो जाते हैं। जी, बिगड़ी हुई balance, तकदीरें, like balance या how life becomes बैलेंस, more balanced. Right, मोर right, right. बैलेंस, तकदीर, उसकी बिगड़ी हुई तकदीरें संवरना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज उसको ताले की चाबी मिल गई है टू ओपन दैट जी। दैट सीक्रेट डोर ऑफ द लक, टू ओपन दैट पर्टिकुलर लाइक विंडो टुवर्ड्स दैट गैलेक्सी ऑफ सक्सेस व्हाट वी Yeah. गाइड। तो Mm-hmm. तो इसमें आजम का ये होता है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हम देते हैं, जैसे या मालिक Mm-hmm. को, या मुल्क को, या कय्यूम है। किसी जी। के लिए या नाफे हो, या कादिर हो, या वहाब हो है, या Mm-hmm. वदूद हो, या सलाम हो, या हाफिज है। तो सबकी अपनी अपनी कॉम्बिनेशन है। और बाज़ Mm-hmm. औक़ात में 2 से 3 लड़ियाँ पढ़वाता हूँ। एक अच्छा। लड़ी मैंने पढ़वा दी या रहमान या रहीम या करीम, फिर मैंने Mm-hmm. पढ़वाया या ज़ुल जलाल वल इकराम या नूर, फिर मैंने Mm-hmm. पढ़वाया या सलाम हो या वहाब हो। ये इस तरीके से दैट डिफरेंट पैटर्न्स कॉम्बिनेशंस, Right, दैट right. सिंपल So कॉम्बिनेशन। does it change like over time, or do you just consistently carry on with the same one, or do you just does it हुँ। change over time? Like ये कैसे आप फिर वो situation को देखते हैं कि अब like ये सही से कि financial सही हो गया तो थोड़ा marital में issues आ गए, or do you use the same one, and like how do you work that out? देखिए, जो जो मास्टर की होती है, जिससे
एक ही लफ्ज पढ़ने से या एक ही अस्मा की तकरार करने से उसके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएं, वो तो उम्र भर उसकी वो ही रहेगी जो Mhm. किसी से उसने लिया है या किसी बुजुर्ग ने उसको दिया है या उसने Mhm. खुद निकाला है या किसी अहले इल्म अहले दानिश या अहले फन से उसने उसे हासिल किया है। इसमें Mhm. आजम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी दिया जाता है, जैसे किसी Mhm. वो फिर वजीफे में कन्वर्ट हो जाता है। वजीफे और इसमें आजम में तो बहुत फर्क है ना, कि किसी Mhm. शादी वर्कआउट नहीं हो रही है, जैसे सनाबाजी है अच्छा। शादी नहीं चल रही, जी जैसे जी जी कोई और नाम है शादी नहीं चल रही है, तो उसको जी। वजीफा दे दिया। ठीक। ठीक। जैसे खैर मुझे वो बहुत सारे नाम, साद हो गया, असद हो गया, ये बहुत सारे और भी नाम है जो कि शादी के लिए नेगेटिव होते हैं। Mhm. तुक्तों का बड़ा नामों में वो है, मामला है। मसलन जैसे नाम के पहले हर्फ में अगर आपके नुक्ते हैं, किसी का नाम शीन से शुरू हो रहा है, जी शीन से बहुत सारे खवातीन का नाम है, शहनाज हो गया। जी। नून से है, नून से Mhm. बहुत सारे नाम है, आधे नाम खवातीन के नून से भरे हुए, तो उनकी शादी अगर सामने भी नुक्ता है, फा Mhm. वाले लड़के से हो जाए, Mhm. नून वाले लड़के से हो जाए, जहां पर उधर भी नुक्ता है इधर भी नुक्ता है पहले दोनों नामों में, तो इन लोगों की नहीं बनेगी, चाहे दुनिया इधर की हम्म, उधर हो जाए, इनकी नहीं। ये सिंपल रूल ऑफ नुक्तों का इल्म है। ये जी। हमने बाल सफेद कर करके पढ़ पढ़ कर ये चीजें हासिल की हैं, समझाने के लिए आप जी। लोगों को कि यहाँ गलतियां नहीं करनी है। हम्म। तो फा वालों के लिए मैरिज में मैंने देखा है बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फरिया हो गई, फायजा हो गई, फरा हो गई, फरहीन हो गई। इनकी इनकी ये हैप्पीली मैरिड नहीं मिलनी है आपको। आप मैं चैलेंज करता हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, मेरी रिसर्च है। मैंने हम्म। तो मैंने नामों में पीएचडी की हुई है एक तरीके, आई एम नॉट क्लेमिंग, आई जी। एम सेइंग ऑन अ लाइटर साइड। बात हो ये। रही थी इसमें आजम की, तो इसमें आजम का नाम से बड़ा गहरा कनेक्शन है, और वो हम्म। कनेक्शन के हिसाब से हम हमेशा उसको। उसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आई वांट टू गो इनटू, आप लोहे कुरान के बारे में, लाइक यू टॉक अबाउट दैट, आप उसका भी हम्म, बताते हैं। सिल्वर के ऊपर आप उसको प्रिंट करके प्रिस्क्राइब भी करते हैं। सो उस हम्म, वो किस लिए होता है? इज दैट फॉर फाइनेंशियल लाइक प्रोस्पेरिटी के लिए होता है वो? उसका भी आप कुछ बताएं कि लाइक हाउ डू यू, ऑल्सो हम्म, गोइंग बैक टू द जेम स्टोन्स और ये लोहे कुरान भी, लाइक अगर लाइक हम जैसे जो बाहर बैठे हुए हैं, इफ वी वांट टू obtain दिस, आपसे हम लेना चाहें तो वो भी आप बताएं कैसे लें आपसे ये लोहे कुरान या अपना जेम स्टोन। तो हम्म, पहले आप लोहे कुरान पर एलाबरेट थोड़ा सा करें कि लाइक जी। what are the benefits of that? लोहे कुरान के ऊपर मैंने यूट्यूब पे भी 2 एपिसोड्स किए हैं, उसमें एक्सप्लेन इट वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कि ये घर में खैर और बरकत के लिए उन आयतों के, उन सूरतों के निशानात हैं जो Mhm. कि हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं, जैसे हामीम ऐन सीन काफ है। सूरह Mhm. बकरा देखें, शुरू होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल Mhm. किताब ला रैब फीह। फिर एक सूरह शुरू हो रही है नून वल कलम, या फिर एक बहुत Mhm. ही बड़ी जलीलुल कद्र सूरह है काफ वल कुरानिल मजीद। तो जो जो अल्लाह पाक ने कुछ सोच के, जैसे ताहा, त्वासीन मीम, Mhm. काफ हा या ऐन साद, तो अल्लाह पाक ने कुछ सोच कर उन सूरह से पहले ये कुछ कोड वर्ड जो कि जिनका मतलब जी। अल्लाह जानते हैं या अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की वसल्लम। आपस की कम्युनिकेशन है, वो जानते हैं। तो जी। उनको हम बरकत के लिए और उन हुरूफ में से ताकत ड्राइव करने के लिए उस खास तरतीब में उसको, उसकी तंज़ीम भी की जाती है, तरतीब भी की जाती है। तंज़ीम तो ख़ैर हम उसमें ऊपर-नीचे करके करते हैं, तरतीब के भी Mhm. हिसाब से डिब्बे या बॉक्सेस को सेट किया जाता है कि भई ये बंदा Mhm. अगर अमेरिका इमिग्रेट करना चाह रहा है या अगर ये कहीं और जो भी उसका Mhm. उसको वरासत में हक नहीं मिल रहा, कोई Mhm. कोर्ट केस चल रहा है या उसे ओहदा नहीं मिल रहा ऑफ़िस में, बड़ी जद्दोजहद कर रहा है, बड़ा मेहनती Mhm. है, बड़ी इसने जनाब वो डिग्रियाँ हासिल की हैं, लेकिन बेचारा ऐसे ही क्लर्कों के साथ बैठा हुआ है। तो वी Mhm. मेक श्योर कि इसको हम वो कॉम्बिनेशन दें कि वो दिन Mhm. में कुछ मर्तबा उसको देखकर उस कॉम्बिनेशन को जब वो रिसाइट करे, Mhm. तो वो जो फ्रीक्वेंसी चार्ज उसको मिलना है उसके ऑरा में, कहाँ नहीं जाती है फिर ऑरा के अंदर और इसके। के अंदर जी। तो ये रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑरा करता है लोहे कुरानी आपका, तो दुनिया में रास्ते खोल देता है आपके लिए, तो दरिया बहा इसको देता इसको लाइक फिर इसकी जो द वे द फॉर्मेट ओरिजिनली इज, इसको एडजस्ट करना, यू कैन डू दैट कि है। ये अलाउड है? हर कोई नहीं कर सकता, यही मसला आता है यहाँ पे। लोहे कुरानी एक तो जनरल जो बाजार में
प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, वो जी। लेके लगा दें, वो भी खैर बरकत के लिए बहुत ही उम्दा है। हाँ। लेकिन स्पेसिफिकली इफ यू आर डूइंग इट फॉर एनी ऑफ योर पर्टिकुलर रीजंस और योर जी। बेनिफिट्स ऑफ द इन द लाइफ, तो आपके उसके हिसाब से उसके बॉक्सेस की तंजीम भी की जाती है और तरतीब भी उसकी, ओके। वो मसा वो कर तस्खीर, जैसे अस्मा की तस्खीर हमें मौक्किलात के साथ पढ़ाई जाती है, ठीक है। हर हर इस्म का एक मौक्किल है। पत्थरों पे भी जब हम जिक्र देते हैं तो वो पत्थर ऐसे नहीं होता जैसे कि बाजार से खरीदा पहन लिया, जैसे पहन लिया। जलेबी खरीदी आपने जी। पेट खराब। इट्स नॉट लाइक दिस। हम्म। इसका पहले पाक होता है पत्थर की, हम्म। पहली कंडीशन है पाक करना। दूसरी कंडीशन है इसको दम करना या तस्खीर करना आपके नाम के साथ। अब किसी का नाम मोहम्मद जावेद है, हम्म। उसको मैंने फिरोजा दे दिया या अकीक दे दिया, तो वो ऐसे नहीं दिया जाता। इट इज ऑलवेज there's some rituals you can say Right, that is right. performed for Performed. purification at a stone or to Right. increase or decrease the vibration, right? Right. पत्थर पत्थर पे मैं फौरन ही आ गया, वो इसलिए लोहे कुरानी मैंने समझा दिया आपको। पत्थरों का ये है कि when I take it in my hand, तो I have a mechanism to judge कि whether this is alive, Mm-hmm. ये जिंदा भी है या मर चुका है। So Right, there's a right. vibration which we feel over here in the forehead. There's a method. Okay. वो भी मैं सिखा Right. दूंगा इन सबको कि वो मेथड से चेक जी। करेंगे कि पत्थर की वाइब्रेशन में यहाँ पर आपको कोई टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। बस उसको ऐसे हाथ में ही पकड़ के आपने फोकस हाँ, थोड़ा कुछ सा पढ़ना करना होता है। है, कुछ पढ़ना अच्छा, होता पढ़ना भी होता है, ठीक है, है, कुछ दैट्स पढ़ना रियली होता इंटरेस्टिंग। है। तो वो पत्थर आपसे बात करता है या वो वाइब्रेशन बताता है कि यार ये मैं दौलत पे जाऊंगा इसकी, या मैं हाँ। इसकी उस पे जाऊंगा, फाइनेंशियल ठीक करूंगा, मैरिटल ठीक करूंगा, या मैं इसको फेम पैदा करूंगा जिंदगी में। टीवी आर्टिस्ट बड़े आते हैं मेरे पास के साथ ड्रामा नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। रियली, दैट्स अमेजिंग। लॉट ऑफ पीपल। तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी शिफा है इन सारी चीजों में। छोटे छोटे में कराता हूँ चीजें, जैसे मंगल जी। और सैटरडे का सदका कितना है, कि क्या कॉस्ट करता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। जी, next to nothing. जी, But like the आप results are overwhelming of these things. Yeah, that was my next thing that I was going on to was the treatments. Okay, job like when someone comes to you and you have analysed their whole situation, so per how what do you prescribe? Is it zikr, meditation, sadqat, the color therapy, the gemstones? So do you just combine everything all together and say कि ये No, मैंने no, no. आपको? It's not like No, that. you don't? We don't No. combine everything like that because there's not everything for everybody, right? There are Okay. specific methods or treatments which have been adopted Okay. क्योंकि बाज लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी Mm-hmm. चीजें होती हैं कि जो मावराए फितरत होती हैं, तो उनके दूर करने के लिए असरात जिसको आप कहते हो, Mm-hmm. इसमें इंतहाई छोटी सी बात मैं अर्ज करूंगा, फिर वो टाइम आपका मैंने काफी दिया। इन असरात का मामला ये होता है कि आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में, और एक ही दुश्मन, अदुव्वुम मुबीन, जो कलाम Mm-hmm. पाक में अल्लाह पाक ने कहा ना कि खुला दुश्मन है। देयर इज नो कोई लगी लिपटी रखी नहीं, अल्लाह पाक ने बता दिया Mm-hmm. कि यार एक ही दुश्मन है, इससे बचना है, बाकी चीजों की खैर है, कवर कर जाओगे, लेकिन इस मरदूत से बचना होगा आपको। नाउ ही इज द जी। वन who creates hurdle in the life, who create hatred in the people's heart, who create like judai in between Mia Bibi, who creates all these enmities Mm-hmm. between the people. तो Mm-hmm. उसके इफेक्ट्स को हमें दूर करना होता है। देन वी गिव सम सॉर्ट ऑफ नक्श टू वियर, टू ड्रिंक और टू बर्न Right. और टू बरी, वो सारी चीजें। या आपके ऊपर किसी ने जादू किया है अगर जी। स्पेसिफिकली, तो Mhm. उस जादू को दूर करने के क्या-क्या तरीके हैं, मऊज़तैन है, रुक़य्या है, या और Mhm. जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सारी ट्रीटमेंट में आती हैं। देयर इज़ लाइक अ होल वर्ल्ड ऑफ लाइक यू कैन से Yeah, so मेडिसिन। that just it just depends on each individual case and situation. Like you can't say कि आप आपका ये मसला है तो you and the next person would be the same. नेक्स्ट पर्सन, So everyone has their own सेट prescription, ऑफ obviously. एक्सपीरियंसेस, यस, Yeah, या, everyone has their own prescription. You know, that's really interesting. और ये color therapy पर मैं आपसे next time ज़रूर if you have time or आप दे like you know if you can take some time out we'll talk about color therapy. ये भी काफी interesting है
Mm. like how colors affect our life as well by wearing a certain color or just being in the presence of a certain color, how that can affect our auras or even Mm. affect our like well-being. Many to Mm. yahan tikar bhi suna hai कि if you're suffering from like stomach ailments, so the color yellow is supposed to really soothe and help your problem. So I think this would be an interesting one to talk about maybe next Well, time. you need a whole new episode for that, because like it's a huge use like colors and lights and colors and the vibration, the coherence of Yeah. how mind and how that put a glow on your aura. Huh? Yeah, definitely. These So things, I like, think I'll be stealing you for another episode and we'll we'll it's my keep honor to have you. Mm. yeah, we'll definitely schedule something again. But I'd like to just thank you for taking the time out. आपने I know कि रमजान भी है और आपके schedule काफी tight है, busy है with your Mm. clients and with your obviously your routine. So inshallah, we'll come back with another interview and we can maybe discuss something like the colors and the or aura and like even if everyone likes this, if you guys like this on YouTube, all the people that are watching, if you guys like this interview or if there's anything that you guys would like to ask, you can drop some messages in the comments and we could maybe make like a short interview on that. And give us feedback on this one as well if you enjoyed it. But we just tried to conduct a small informative video just so that everyone could know about Dr. Syed Saif Qureishi's expertise. But thank you once again, and I hope everyone enjoyed this. We'll meet again, inshallah, in another episode. So, Allah Hafiz.